we are being joined by our editor-in-chief, 𝗟𝗡𝗩 Hussain from the newsroom. Well, 𝗟𝗡𝗩, ECI has announced the dates for Lok Sabha and Assembly elections. Over to you. Yes, Pooja, this is the big announcement that the nation has been waiting for. The nation has been waiting for just this announcement, the schedule for the 18th Lok Sabha. Now, we now know that it will be a 7-phase election starting from the 19th of April. That will be the first phase, and it ends on the 1st of June. That will be the 7th phase. The results will be declared on the 4th of June. Now, this is the first major dates that we have heard. The 7-phase elections to the 18th Lok Sabha has been announced. The first phase will start on the 19th of April, the second phase on the 26th of April, the third phase on the 7th of May, the fourth phase on 13th of May, the fifth phase on the 20th of May, sixth phase on the 25th of May, and the seventh phase on the 1st of June. Now, as far as the Northeast is concerned, elections to the Arunachal Pradesh and the Sikkim legislative assemblies are also being conducted simultaneously with the Lok Sabha elections. The dates of the assembly elections in Arunachal Pradesh as well as Sikkim is 19th of April. The voting day for the state assembly elections in Sikkim and Arunachal Pradesh is the 19th of April. Let me clarify that. Now, coming back to the Lok Sabha, as I said, it is going to be a 7-phase elections starting from the 19th of April to the 1st of June. The results will be declared on the 4th of June. Now, as far as the northeastern states, 8 northeastern states are concerned, the entire Lok Sabha elections will be over in the first 3 phases. Now, on 19th of April, all the states are going to the Lok Sabha elections in all the 8 northeastern states on the first phase on 19th of April, and there is the second phase elections will be held in Assam, Manipur and Tripura. Some of the constituencies will go in the second phase of elections in the 3 states, that is Assam, Manipur and Tripura, and the third phase, the remaining constituencies elections only in the state of Assam. Now, the entire northeastern state election will be over in the first 3 phases, except Assam, Manipur and Tripura. The rest of the 5 states elections will be over on the first phase itself, and that includes Mizoram. Elections will be over on the first phase. Nagaland elections will be over in the first phase, that is on the 19th of April itself, and Meghalaya elections will be over in the first phase itself, that is on the 19th of April. Even Arunachal elections will be over on the first phase, that is the 19th of April, as well as Sikkim elections will be over in the first phase, that is the 19th of April. And in the second phase, some constituencies in Assam, Manipur and Tripura will go to the polls, voting for in the second phase as far as Northeast is concerned. And in the third phase, there will be elections to the remaining Lok Sabha constituencies in Assam. So, this is the overall schedule as far as the elections are concerned. Now, this time, the Election Commission has gone out of its way to ensure that every single voter can cast his or her vote. That is the primary focus. There are 2 primary focus that I have marked or noticed during that lengthy press conference by the Chief Election Commissioner Rajiv Kumar. Now one, of course, is that the Election Commission is going out of its way to ensure that every single voter is able to cast his or her vote. Number 2, the crackdown on election violence, non-bailable warrants on those who indulges in acts of violence. There will be drones that will be checking on booth activity in all the booths along the border. Now, within 100 minutes, if there is a fraud, if there is graft, or if there is any election related irregularities, within the first 100 minutes, a crackdown team that has been specially will be on mobile, will be arriving that particular spot. Now, a complainant's location can also be located, the latitude, longitude of
a complainant will be determined immediately through the complaint as soon as it is received from his or her mobile phone. So these are some of the technology-based initiatives that the Election Commission has taken this time around. They're leaving absolutely no stone unturned to make sure that this is a violence-free election. This is a free and fair election, and the Election Commission has gone out of its way to, as I said, to ensure every voter votes. And now for all those who are 85 and above of age, along with the disabled, will be able to cast their votes from home. Arrangements are being made to cast their votes from home of all those people who are 85 and above, as well as the disabled. Now these are some of the highlights of this elections, and crackdown on graft. As I have said, 3,400 crore rupees have been seized in the last couple of months, and this is a rise of 835% rise in the number of seizure. The seizure volume has increased by 835%. A whopping rupees 3,400 crores have been seized by various agencies during the last couple of months. That is also a very critical announcement that has come from the Election Commission. Now the Election Commission has also appealed against hate speech by campaigners, against hate speech, against appeal on religious grounds. So these are some of the taboo subjects. These are some of the subjects that have been made taboo by the Election Commission. No hate speech, that is barred. No appeal can be made based on religion, on religious lines. So these are some of the things that the Election Commission has made clear. Now I want to ask our producer, who our reporters are lined up in various parts of the northeastern region, and they have some 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗀𝗧𝗏, Prakash and Arunachal are on lined up. Who can we go to? Can my producers tell me, please? 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗀𝗧𝗏, Prakash and Arunachal okay, are lined up. over to you, Pooja, to carry forward, because I can't hear anything. All right, our reporters are lined up to give us the first reactions after the dates were announced by the Election Commissioner of India. And Prakash Adhikari joins us from Sikkim. Prakash, डेट्स अनाउंस कर दिए गए हैं सेकंड फेज लोकसभा इलेक्शंस जो होने वाले, जो सिंगल फेज इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें सिक्किम भी आता है. इफ वी टॉक अबाउट द असेंबली इलेक्शंस, तो असेंबली इलेक्शन सिक्किम में 19 अप्रैल को होने वाला है. आपके साथ अभी कौन है? व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शंस आफ्टर द डेट्स वर अनाउंस्ड? जी हाँ पूजा, सिक्किम का जो इलेक्शन है असेंबली और लोकसभा एक ही साथ होगा. 32 असेंबली सीट एंड एक लोकसभा के लिए, और उसके लिए 19 अप्रैल जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन होने वाले हैं. और अभी मेरे साथ रूलिंग पार्टी के मीडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर तथा मुख्यमंत्री के प्रेस सेक्रेटरी विकास बस्नेत थे. विकास जी, आज 19 अप्रैल को जो इलेक्शन होने वाला है सिक्किम का, इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है. तो एज ए रूलिंग पार्टी, योर फर्स्ट रिएक्शन? Firstly, we would like to welcome the Prakash, our editor-in-chief 𝗟𝗦 𝗔𝗀𝗀𝗧𝗏 is joining us live. इलेक्शन कमीशन का जो MCC है और उसके अनुरूप जितना भी दिशा निर्देश होगा, उसके अनुरूप सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव की तैयारी में है. अभी हम लोग का 2-3 दिन में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका गठन होगा. उसके बाद में हम लोग कैंडिडेट का चयन करेंगे और हम लोग सभी 32 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और एक लोकसभा के लिए हम लोग उम्मीदवार का चयन करके हम सभी जनता में समर्पण करके, जो हम लोग ने 5 साल के अंतराल में काम किया है, जो हमारे नेता श्रीमान PS गोले जी ने जिस तरह से सिक्किम का संपूर्ण विकास के लिए काम किया है, उनके लिए हम कटिबद्ध रूप से हम इलेक्शन में जाकर अपना प्रचार प्रसार शुरू करेंगे. जी हाँ वसबीर, ये थे विकास बस्नेत जो प्रेस सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर विकास बस्नेत मेरे साथ है. प्रकाश, विकास बस्नेत जी से आप पूछिए. अभी इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि देयर विल बी नो हेट स्पीच. देयर हैज टू बी कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंपेन्स हैज टू बी वेरी सिविल. तो ये देखा जा रहा है कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और SKM के बीच में जो जिस लेवल का एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस के मद्देनजर क्या यह कम होगा?
बिकॉज जो हमारा एडिटर इन चीफ वासबीर सर का एक क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि जो सिक्किम में अभी वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को लेकर जो अभी एसडीएफ और एसकेएम के बीच में जिस तरह का बातें हो रहा है, एसडीएफ इलेक्शन कमीशन में भी गया है, जो अभी गाइडलाइन जो ईसीआई ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, ये वायलेंस का जो बात है ये आने वाला इलेक्शन में नहीं होगा, रूलिंग पार्टी की ओर से आप कितना कैसे इंश्योर करना चाहेंगे? देखिए, एक तो वायलेंस जो हुआ है उसका हमने कंडेम करके जो हमारा सिक्किम पुलिस है वो सशक्त रूप से कार्रवाई भी किया है और उसका अभी कोर्ट में केसेस भी चल रहा है। और उसके अलावा जैसे पहले इलेक्शन में जैसे 99 हुआ, 2004 हुआ या तो 2009 हुआ या 2014 में, उसके मुकाबले में अभी वायलेंस बहुत कम हुआ है। जो एसडीएफ है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग अपना ये वायलेंस को एक इश्यू बनाकर पब्लिक में एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। हाँ, ये इंश्योर करना चाहते हैं कि एज अ रूलिंग पार्टी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के कारण हम लोग इंश्योर करेंगे कि ये इलेक्शन एकदम वायलेंस फ्री हो और जैसे भी जितना भी ऐसा घटना ना हो, हम लोग सिक्किम का जो शांति सुरक्षा व्यवस्था है उसको कायम रखने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। और उसके मुताबिक जो इलेक्शन का गाइडलाइंस होगा वो इस इलेक्शन के गाइडलाइंस के मुताबिक ही हम लोग का जितना भी कैंडिडेट होगा और पॉलिटिकल पार्टी को जितना भी रिस्ट्रिक्शंस होगा वो रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम लोग चुनाव अपना प्रचार प्रसार करेंगे और चुनाव कैंपेन करेंगे। जी हाँ, वासबीर जो एज ए रूलिंग पार्टी वो लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो वायलेंस का जो बात है वो वायलेंस नहीं होगा। वासबीर राइट प्रकाश, ये लास्ट क्वेश्चन है विकास बासनेत जी के लिए। क्या अभी ये भी इलेक्शन कमीशन ने सख्त कदम उठाएगा? दे हैव मेड इट वेरी क्लियर, दे सेड दैट जो भी वायलेंट एक्ट में इंडल्ज करेंगे उनको अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है उसको पूरा करने के लिए एडिटर की ओर से क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे आप लोग काम करेंगे और आप लोगों का पार्टी का जो वर्कर्स है उन लोगों को कैसे आप लोग गाइडलाइन देंगे? देखिए, जैसे इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो हम लोग ने उसका वीडियो लिंक हमारा जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है और फेसबुक का हम लोग का ऑफिशियल पेज है वहाँ पर हम लोग ने ब्रॉडकास्ट कर दिया है। और हम लोग ने सभी कार्यकर्ता को ये बोला है कि ये प्रेस रिलीज को वो लोग एकदम सुने और इसी हिसाब से इलेक्शन कैंपेन शुरू करे। और उसके मुताबिक हम लोग ने जो बूथ लेवल कमेटी बनाया है और जो बीएलओज हम लोग ने पार्टी के अपना नियुक्त के बूथ लेवल कमिटीज जो नियुक्त किया है उन लोग को भी ऑलरेडी हम लोग ने इलेक्शन का जितना भी गाइडलाइंस है अभी तक इश्यू हुआ वो गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग ने ट्रेनिंग दे दिया है। तो वो जितना भी बूथ लेवल कमेटी है वो लोग जैसे WLC कमेटी हो गया, हम लोग का सांगठनिक जितना भी ब्लॉक लेवल कमेटी हो गया या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हो गया, उन लोग को ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और आगे भी जितना भी इलेक्शन कमीशन से गाइडलाइंस आएगा, जितना भी अथॉरिटी से जैसे एसपी ऑफिस से या तो डीसी ऑफिस से जितना भी गाइडलाइंस आएगा उसी हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करके इलेक्शन कैंपेन करेंगे और एंश्योर करेंगे कि वायलेंस फ्री इलेक्शन सिक्किम में हो। Thank you, Prakash. For the moment, let me go quickly to our correspondent Ripunjoy Das. Ripunjoy is in Longding in Arunachal Pradesh. Ripunjoy, I understand you have two political leaders with you. Go ahead, please. Yes, Wasbir, I have with me Mr. Honchun Namdang, who is a minister from Arunachal Pradesh, and he is from Longding district only. And I also have MLA of Longding, 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏। सर, अरुणाचल का 19 अप्रैल को डेट दिया है, तो आप क्या रिएक्शन है? फर्स्ट रिएक्शन ये सर। हम क्या रिएक्शन करेगा? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे फैसला किया है उसके अनुसार जाएगा। हमारा तरफ से क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन नहीं, मेरे तरफ से अच्छा है, टाइमली जाएगा। तो हम लोग का गवर्नमेंट तो अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी वी आर वेल प्रिपेयर। और बीजेपी का सरकार होगा, सेंटर में भी मोदी जी का होगा और जहाँ में अरुणाचल में भी पेमा खांडू साहब का ही सरकार होगा, बीजेपी का सरकार होगा। हम लोग सब खुश है। आज पेमा खांडू साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का आके हम लोग को यहाँ में मतलब काफ़ी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो डिले हो रहा था उसको भी आज फुलफिल किया है। और कुछ बहुत सा मतलब वादा किया है कि हम लोग को बीजेपी 3 विधायक, ये डिस्ट्रिक्ट का 3 विधायक बीजेपी को भेजना है। तपिरगांव जो ईस्ट
अरुणाचल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 को भी भेजना है बोल के सीएम साहब ने हम लोग को अभी बोल के चला गया है, वादा करके चला गया है। हम लोग यहाँ का वांचो के जितना भी लोग हैं वो लोग हम लोग का 3 विधायक को भेजेंगे ईटानगर में, और सेंटर में 2 MP है, वेस्ट का किरण रिजिजू और इस तरफ का 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏, उनको भेजेंगे हम लोग। वी हैव कमिटेड। 19 अप्रैल का रिपुंजॉय प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग का कोई प्रॉब्लम ना है। अगर प्रॉब्लम भी है तो स्टेट गवर्नमेंट, हमारा सीएम साहब बोलेगा, हमारा DCM साहब बोलेगा, गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बोलेगा, तो इसका डेट जो दिया गया है उसका बारे में रिपुंजॉय, you know, this time रिपुंजॉय अच्छा है रिपुंजॉय, yes Wasbir, this time the election commission, one of the focus of the election commission is to make sure that every single voter comes out to vote. They've said that anybody who is 85 years and above, they can vote from their homes, and including the disabled people, they can also vote from their homes. Now, Arunachal has a lot of villages located in remote areas. Can you ask the Honorable Minister, what are the arrangements they are making to make sure that every single voter comes out to vote on election day? sir. सर, इस बार इलेक्शन कमीशन में एक चीज बोला है कि जो भी वोटर, एवरी वोटर शुड एक्सरसाइज देयर वोट। कोई भी 85 से ईयर से ऊपर हो या कोई भी दूर दराज इलाके में हो, उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, वो चाहे वोट देना हो। आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वक्का पंचाव जो है एकदम म्यांमार बॉर्डर में है, बहुत तकलीफ है, वहां में लोग बहुत दूर दराज से आते हैं। तो आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि हर कोई वोट दे? आप एक विधायक रहे, जब पिछले 25 साल से आप विधायक है, मिनिस्टर है। तो पंचावक्का में इन पर्टिकुलर पंचावक्का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 60 नंबर का है अरुणाचल में। तो हम लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग को भी, हम लोग का पार्टी का वर्कर लोग बुक के निकलता है, तो वो बूढ़ा बूढ़ी कहेंगे कि कौन सा पार्टी को कौन सा कैंडिडेट का पक्ष में देगा, तो वो जैसे बताएगा वहाँ वोट डाल देता है। और हैंडीकैप को भी निकाल देता है, बुक के निकलते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि अडल्ट फ्रेंचाइज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को दिया गया है, राइट्स दिया गया है कि पॉलिटिकल राइट्स दिया गया है, इसलिए एक्सरसाइज करता है वहाँ में। बूढ़ा बूढ़ी को भी बुक के निकालते हैं, खींच के पकड़ के निकालता है, लेकिन जो उस कौन सा पार्टी को दे रहा है या कौन सा कैंडिडेट को दे रहा है, तो उसका चॉइस में जाएगा। ब्लाइंड का या कान नहीं होने वाला होता है, नहीं कान बंद होने वाला होता है, और या कोई ब्लाइंड होता है, तो उनको भी पूछता है कि किस किस को देगा बोल के हम लोग एक्सरसाइज कर लेता है। आई कैन इंश्योर दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी अच्छा से एक्सरसाइज करेगा, नो प्रॉब्लम। So, Wasbir, do you have any specific question for? No, you have another he is a senior minister in the Phewma Khandu ministry. Yes. How will he ensure? Yes, I have another MLA with me. Yes. How will the government ensure? You can ask this to the minister. The same question. Yeah. No. Wait. Ripunjay, wait. The specter of violence is always there in Arunachal Pradesh. Some militant groups always come up with threats and all, including one militant group has issued threats. So how is the Arunachal government prepared to have a violence-free election? You can ask this to the Honorable Minister, and then you can ask to the other gentleman with you. Yes, Wasbir, the Longding MLA is with me, Mr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 now. ये लॉन्गडिंग का जब बात आता है, सब समय लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आता है, तो यहाँ जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स का भी कभी मतलब में थ्रेट रहता है कैंडिडेट्स लोगों को। सो यहाँ गवर्नमेंट जो है इलेक्शन इसको एक चैलेंज के रूप में लेके कैसे इसको कंडक्ट करेंगे? क्या मतलब आप लोग पॉलिटिकली कैसे इसको हैंडल करेंगे? पॉलिटिकल अभी ऐसे है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को थ्रेट तो नहीं है। कोई कॉल आया था कि इसके सपोर्ट में जाना, उसके सपोर्ट में जाना है, वही है। थ्रेट तो खास अभी तक तो कुछ इस तरह का तो नहीं है। और आपका पॉलिटिकली हम लोग जो हैंडलिंग जो है ओलू के साथ, तो किस तरह से हम लोग हैंडलिंग करें, तो ओलू की जो है यहाँ आने से हम लोग बोलता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोलने से ठीक है। तो सबको जो है अडन फ्रांसिस को फ्री हैंड देना है, जिसको चॉइस करेगा वही तो आपका नेता बनने दो और विकास का काम करने दो। Right. So that was his straight reply. Ki there is not. Yes. Right. Ripunjay, you can continue the conversation with you. Thank you very much for the time being. I have also
ฎ joining me, ฎ from Guwahati. But let me tell you, before coming to ฎ, Assam, the election is in 3 phases. The first phase is on April 19. 5 seats, 5 Lok Sabha seats are going to the polls on April 19. The second phase, 26th of April, another 5 Lok Sabha seats are going to the polls on the second phase. And in the final and third phase, that is on the 7th of May, as far as Assam is concerned, there will be elections to the 4 Lok Sabha seats. So, ฎ, what are you picking up? You know, the state is well prepared for the elections. That's right, Wasbir. More or less the schedule of 2019 Lok Sabha polls as well as the schedule of the 2024 Lok Sabha poll matches, because in 2019 also the entire country, the Lok Sabha election was held in 7 phases, and in Assam it was held in 3 phases. The first phase, of course, was before Bihu in Assam and 2 phases after Bihu. And this time also in Assam it is being held in 3 phases, but this time after Bihu. The first is on April 19th, then on April 26th, and then on 7th of May, and the results will be declared on 4th of June. So in entire Northeast also it's the same, because in Manipur also last time in 2019 it was held in 2 phases, and in Tripura also it was held in 2 phases, and this time also it will be held in 2 phases in the state of Manipur and Tripura. And the state elections, assembly elections of both the states, which goes simultaneously with the Lok Sabha elections, that's Arunachal Pradesh and Sikkim, it was held in a single phase on one day, and that is the same this time also. It will be held on the 19th of April. So in Assam, this is being held in 3 phases. Last time in 2019, 1 phase was held before the celebrations of Bohag Bihu. But this time, all the 3 phases will be held after the Bohag Bihu celebrations are over. That's starting from 19th of April. Right. ฎ, stand by, don't go away. Let me go to Shillong, where our correspondent Purbasha is standing by. Purbasha, it will be a single phase election as far as Meghalaya is concerned, for the 2 seats of Meghalaya, that is the Shillong seat and the Tura Lok Sabha seat. It's a single phase polling as far as Meghalaya is concerned. So the state is geared up. Yeah, of course, Wasbir, the state has geared up for the election, and we have seen that apart from BJP, other political parties have already announced their candidates, and the electioneering process is going on. And just before the announcement by the Election Commission, we have seen that NPP too have launched its campaign from Garo Hills, and the political atmosphere has really heated up. But as of now, the question is that the state election missionaries have to take in view the law and order situation, which is really a great concern after Shillong blast. And last week, we have seen that series of IED being recovered from Rivhar district. So the police have to be very active, and the election missionaries have to tighten their seat belt, because the election for this Shillong parliamentary seat as well as the Tura parliamentary seat will be held in the first phase. Right, Purbasa, hang on there. Let me wrap up the whole major points from this announcement by the Election Commission today. The elections to the 18th Lok Sabha, the schedule has finally been announced. That was the moment the entire country actually was waiting for. Now, when the Chief Election Commissioner and his team made this announcement a short while ago, live over live television and live streaming, the election to the 18th Lok Sabha will be held in 7 phases between April 19 to June 1st. And the results of the 18th Lok Sabha will be declared on the 4th of June. Now, this is the overall. 98 crore voters are registered. 98 crore voters are registered voters. So, that is the size of the electorate in the whole country. And now, as far as the Northeast is concerned,
you know, there will be simultaneous elections to the state assembly in 2 states, that is the 32-member Sikkim assembly and the 60-member Arunachal Pradesh assembly. Now, there are 2 other states in the country that are having simultaneous assembly elections, and they are Orissa, that has 147-member Orissa assembly, and Andhra Pradesh, that has a house strength of 175-member Andhra Pradesh assembly. Now, 4 states are going to witness simultaneous elections to their state assemblies. Now, coming back to the northeast, the states which are going to polls for the respective state assemblies are Arunachal Pradesh and Sikkim, apart from, of course, the Lok Sabha elections. Now, there are Assam elections is in 3 phases: April 19, 5 seats; April 26, 5 seats; and 7th of May, 4 seats. And there will be single phase polling for 2 seats each in Meghalaya, Arunachal Pradesh and Manipur. And polling in these states will be on April 19. Polling for the lone Lok Sabha seat in Mizoram, Nagaland, Sikkim is also on 19th of April. Now, 2-phase polling for the Tripura East and Tripura West Lok Sabha seats is also on April 19 and April 26. Now, as I said, Manipur has 2 seats. One of the seats, the election is on the first phase, that is on the 19th, and the Manipur inner seat, the election is on the second phase, that is on the 26th of April. And Tripura also, one of the seats is going to the election on the 26th of April. And Assam is the only state that has elections in the 3rd phase as far as the northeastern region is concerned. Now, this is the big update from as far as election dates are concerned. Over to you, Pooja. We have still our reporters standing by.